नमस्कार, जी बिजनेस में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क। मैं हूं मनोज दारा और आज हम बात करने वाले एक ऐसे इंपॉर्टेंट मटेरियल के बारे में जो कि है प्लास्टिक। इनफैक्ट एक छोटा बच्चा जब सुबह दूध पीता है और वहां से लेके एक इंडिविजुअल जो पिल्लो पे सोते हैं वहां तक प्लास्टिक का इन्वॉल्वमेंट हो गया है। इनफैक्ट ब्रश करते टाइम पे भी आप जो मटेरियल जो यूज करते हैं ब्रशेस में, वो भी एक प्लास्टिक से बना हुआ रहता है। इनफैक्ट आपको एक बहुत ही एक अहम इंफॉर्मेशन दे दूं, आप इस समय जो एक पॉलिएस्टर की जो शर्ट पहने हुए हैं वो भी प्लास्टिक से बनी हुई है। तो आज हम बात करने वाले हैं प्लास्टिक्स और उसके इंपैक्ट और ह्यूमन हेल्थ के बारे में। और आज हमारे साथ एलीट पैनल है, साइंटिस्ट और डॉक्टर्स हमारे साथ हैं इस पैनल डिस्कशन में। और ये जो टॉपिक है आज का वो है Are plastic bottle safe for humans? Let me introduce you all to the elite panel which we are having. To my left is Dr. Swaminath Sevaram, former director CSIR National Chem Laboratory. Welcome to the show. उनके लेफ्ट में है प्रोफेसर GD यादव, वाइस चांसलर इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई। वेलकम टू द शो सर। थर्ड पैनलिस्ट हमारे साथ है डॉक्टर RK सांघवी, कंसल्टिंग फिजिशियन है, चेयरमैन न्यूट्रोकेमिकल एंड मेडिकल से वो बिलोंग करते हैं। वेलकम टू द शो एज वेल सर। फोर्थ जो पैनलिस्ट है हमारे साथ डॉक्टर बिपिन M पंडित हैं, ऑनरेबल एंड ही इज अ गायनेकोलॉजिस्ट, कूपर म्युनिसिपल हॉस्पिटल से हैं वो। वेलकम टू द शो। एंड फिफ्थ जो पैनलिस्ट है हमारे साथ डॉक्टर सुरेंद्र S तांबे हैं जो कि एक कंसल्टिंग पीडियाट्रिशियन है, संकल्प क्लिनिक से बिलोंग करते हैं। वेलकम टू द शो एज वेल। इनफैक्ट डॉक्टर्स, योर टेक ऑन दिस वेरी इंपॉर्टेंट इशू जो प्लास्टिक है और एक अहम हिस्सा जो बन चुका है एक आम आदमी की जिंदगी का, आप क्या बोलना चाहते हैं उसके बारे में? Plastics are today everywhere, right from the home to the office to the workplace. Everywhere we encounter plastics in our daily life. Right. And I think it has become a part of our life in totality, प्रोफेसर यादव, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे होगा। आम आदमी की जिंदगी में कितने प्रकार के प्लास्टिक्स उपयोग में आते हैं? कैन यू एलॉबरेट मोर ऑन दैट? या एक्चुअली क्या है कि देर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स विच आर रिलेटेड टू पॉलीमर्स। एक है प्लास्टिक्स, दूसरा है रबर्स, और तीसरा है जिसको फाइबर्स बोलते हैं। जो प्लास्टिक्स में थर्मोसेटिंग टाइप प्लास्टिक होता है और दूसरा है कि जिसको हम थर्मोप्लास्टिक्स बोलते हैं। पॉलीइथिलीन टर्पथालेट, PET बॉटल जो आप जो वापरते हैं, पेट बॉटल जो वो होता है। दूसरा तरफ PVC होता है, पॉलीइथिलीन होता है, पॉलीयूरेथेन होता है, पॉलीस्टायरीन होता है। और जैसा सेल्यूलोजिक में होगा तो आप तो वापरते हैं हमेशा, जो कपड़े वापरते हैं, फाइबर्स जो है। तो ऐसे बहुत प्रकार के हैं। डॉक्टर सेवराम, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होगा, व्हाट काइंड ऑफ एप्लीकेशंस आर दे put to use? Can you elaborate more on that? Plastics are an intrinsic part of every material that we use. Household goods, you go into any homes, you will see plastics material made of fibers, made of thermoplastics. You go, look at your automobiles, you have enough of plastics in your automobiles, your tires are made of rubbers. You go to your hospital, right. You will see a whole lot of plastics material. The blood bags which we use is all made of plastics. The intravenous tubes are right. made of plastics. Even the implants into our body, which is useful to prolong the life and the quality of life of a human being, ये भी प्लास्टिक से बने होते हैं। डॉक्टर सांघवी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होगा, क्या ऐसा कोई स्पेशल प्लास्टिक है जो मेडिसिन और खाद्य पदार्थ की पैकिंग में यूज होता है? तो मेडिसिन में तो नॉर्मल प्लास्टिक जो यूज होता है वो तो पेट बॉटल्स होते हैं। पेट बॉटल जो होती है काफ़ी सब मेडिसिन उसके लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, क्योंकि ग्लास बॉटल्स विच वर यूज बिफोर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एज फार एज ब्रेकेजेस आर कंसर्न, राइट, ट्रांसपोर्टेशन, द वेट एक्सेट्रा। सो प्लास्टिक इज मच मोर बेटर, कन्वीनियंट टू हैंडल। इवन वो जो ड्रॉप्स देते हैं ना, जो पोलियो के ड्रॉप्स देते हैं, जी, और वो उसी बॉटल उसी मटेरियल से तो होते हैं जी। जो 1 बूंद दे दो, 2 बूंद दे दीजिए आप जी। जैसे आपने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन गया है ये प्लास्टिक हमारे जिंदगी का, और सब जन एग्री भी कर रहे हैं इससे। प्रोफेसर यादव, नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, प्लास्टिक हमारी जिंदगी का एक आम हिस्सा तो बन ही गया है, आर दे सेफ? 100%। प्लास्टिक आर द सेफेस्ट मटेरियल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ये हमने सेफ्टी की बात कही। शिवराम सर, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, क्या हैवी मेटल्स आर यूज्ड इन पेट बॉटल्स के प्रोडक्शन में होते हैं, जो कि एक माना जाता है, एक मिथ है कि हार्मफुल है वो?
आपको आपके क्या कमेंट्स है इसके ऊपर? सभी लोग पानी आजकल पेट बॉटल में देते हैं क्योंकि वो पानी का क्वालिटी जो बॉटल में जो क्वालिटी है विच इज बेटर देन द वाटर दैट इज अवेलेबल आउटसाइड. नाउ वन ऑफ द suspect that people are asking is that there is an antimony which is an antimony trioxide which is used in small quantities as a catalyst while making the polyethylene terephthalate bottle. Right. The question is, does it come into the water that is stored even at 50, 60, 70 degrees centigrade? Now all evidences show that no water that is stored in PET containers has any appreciable amount of antimony that is leaching out of the bottle. मतलब वो जो एलिमेंट है वो वाटर में नहीं बनेंगे. वेरी नाइस, वेरी नाइस. एक्चुअली टुडे आजकल तो वो आजकल तो ऐसा है कि आपका पार्ट्स पर ट्रिलियन में उसका मेजरमेंट हो सकता है और हो रहा है एनालिटिकल मेथड से, और कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है कि जितना भी आप एनालिटिकल मेथड से देख सकते हैं कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है कि ये एंटीमनी पानी में आ रहा है. राइट. डॉक्टर सांघवी, व्हाट आर द प्लास्टिक बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज्ड इन द मेडिकल टेस्ट? मेडिकल में तो बाय एंड लार्ज ओनली द पेट बॉटल्स आर यूज्ड. प्लास्टिक में तो काफी प्लास्टिक्स आते हैं, जैसे मैंने अभी कुछ प्रोफेसर यादव वगैरह से सीखा है और सुना है. बट मेडिसिन यूज में सिर्फ पेट बॉटल आते हैं. पेट बॉटल में द ओनली कंसर्न जो होता है, जो एंटीमनी की बात कर रहे हैं उसी की कंसर्न होती है, लेकिन वो एंटीमनी की क्वांटिटी इतनी मिनिस्क्यूल होती है एंड विद इन द परमिसिबल लिमिट्स. राइट. सो देयर इज नो हेल्थ हजार्ड बिकॉज ऑफ दैट टू एनी एक्सटेंट. आपने हेल्थ हजार्ड की बात कही, नेक्स्ट क्वेश्चन हेल्थ पर ही है. मरीज की हेल्थ पर कोई असर पड़ता है? अब तक तो हम लोग ने जितने भी डेटा है, जितने भी फीडबैक्स हैं, इतने सालों से प्लास्टिक बोतल यूज की है, जो भी स्टडीज भी हुई है, जो भी रिपोर्ट हुई है, राइट, उसी में भी कुछ दिखाया नहीं है कि ये कोई ग्लास बोतल या प्लास्टिक बोतल से कोई डिफरेंस हो एज फार एज हेल्थ हैजार्ड्स आर कंसर्न. मिस्टर पंडित, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होगा. इन योर वाइड एक्सपीरियंस हैव यू कम अक्रॉस एनी सच वुमेन जो एक प्रेग्नेंट वुमेन है और एनी अदर वुमेन जिन्हें they have been affected due to medicine administered through PET bottles? ग्लास बॉटल्स और प्लास्टिक बॉटल्स में दवाई देने से कोई फर्क नहीं है, और बहुत सारे स्टडीज हुए हैं. स्पेशली केयू शाह कॉलेज ऑफ फार्मेसी में एक स्टडी किया गया था कफ सिरप के ऊपर, जहां दवाई में कोई असर नहीं हुआ प्लास्टिक बॉटल की वजह से, क्योंकि एफडीए ने भी यूएसए में ऐसे टेस्टिंग बहुत सारे किए हैं और उनको पता चला है कि प्लास्टिक इज ऑलवेज बेटर टू यूज फॉर मेडिसिन ऑल्सो. मेरे हिसाब से मेरे प्रैक्टिस में मैंने ऐसे कोई केसेस नहीं देखे जिसको प्लास्टिक बॉटल में दवाई लेने की वजह से कोई दिक्कत हो गई या कोई तकलीफ हो गई, आइदर प्रेग्नेंट लेडी को या उनके बच्चे को डिलीवरी के बाद. ये प्लास्टिक बॉटल का उसमें कोई असर नहीं है. इनफैक्ट बहुत सारे पेशेंट्स खुश रहते हैं कि उनको ज़्यादा वजन कैरी नहीं करता और बॉटल गिरने का या टूटने का या दवाई स्पिल होने का डर नहीं है. तो मेरे हिसाब से प्लास्टिक बॉटल में दवाई देने से कोई नुकसान नहीं होना चाहिए पेशेंट लोगों के ऊपर, इवन इफ दे आर प्रेग्नेंट और अदरवाइज. फॉर डॉक्टर तांबे, इन योर वाइड एक्सपीरियंस हैव यू कम अक्रॉस एनी सच केस जहां पर किसी बच्चे को प्लास्टिक की बोतल से कुछ ऐसा इन्फेक्शन या ऐसा कुछ, एनी सच केस हैज बीन रिपोर्टेड? प्लास्टिक की बोतल से बेसिकली जो मेडिसिन उसमें रहते हैं उससे तो कुछ नहीं होता है. तो ये पेट बॉटल्स में दवाई पैकेज करने के बेनिफिट्स क्या हैं आपके हिसाब से? बेसिकली उसकी वजह से जो बच्चों जब हैंडलिंग करते हैं तो मदर या बच्चा जब उसको दवाई पिलाया जाता है तो उसका टूटने की वजह से ग्लास की इंजरी होने के जो चांसेस रहते हैं वो कम रहते हैं. राइट. उनको कहीं ट्रैवल करना है तो कैरी करना इजी हो जाता है. राइट. एंड स्पिलेज इस पे से कम हो जाता है. तो एक्चुअली एट इमरजेंसी टाइम अगर कोई ग्लास बॉटल उसके हाथ से टूट जाएगा तो बच्चे को उसका डोज नहीं जाएगा, ही विल सफर अ लॉट. आपने बहुत अच्छी तरह से बताया कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन टू मिस्टर सांघवी साहब के लिए कि यूज ऑफ प्लास्टिक्स इन इंडिया वर्सेस ग्लोबल कंट्रीज में, अगर जो प्लास्टिक का जो यूजेज है आप उसके ऊपर इलॉबरेट करेंगे थोड़ा. पेट बॉटल आर द वंस विच आर द सेफ. सब फार्माकोपिया होता है सब कंट्री के, जो स्टैंडर्ड्स ले डाउन करती है उनके हिसाब से पेट बॉटल अलाउड है. जैसे यूएस है, यूरोप है, यूके है, जापान है, चाइना है. इन द सेम वे इंडिया में भी उसका यूज उतना ही होता है
just like any other developed countries. What is the government of India doing to ensure the safety of this issue? The government of India, through various regulatory bodies, have prescribed all the safe limits of use of these materials in different applications, in food contact applications, in applications where there are possibilities of storage of water, possibilities of storage of drugs, and we are actually following all the international norms, the globally accepted international standards as per the US FDA, as per the European Commission directives. We have adopted all those norms into the Indian standards. All the norms. All the global norms have been adopted into the Indian standards, and these are being enforced by the various regulatory bodies of the government, who are then making sure that the people who package these material, जो दवा हो, पानी हो, खाने के चीज हो, वो जब जो पैक करते हैं, वो कंटेनर ये जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको कंफर्म करती है. Right. Dr. Sanghvi, आपको क्या लगता है कि how are Indian regulations compared to that of US, Europe and Japan? They are absolutely harmonized. All the regulations are harmonized as per the regulated markets. All right. All developed markets. Okay. Is there any government regulation or test that pharmaceutical company has to conduct before adopting any material? Any particular medicine which you are going to put in any packaging, you have to do a stability study. All right. And that stability study shows that this particular material is quite safe in that particular packaging that is used. Professor Yadav, is it possible that PET bottles, interact with medicines? आपको क्या लगता है? No, I don't think anything will happen like that. See, because it has been a safe material, proven safe material, global standard, and all sorts of food products, medicines, everything is stored in that. And see, ultimately the tests which are done, one of the tests is toxicology studies. All right. And those toxicology studies have shown that they are quite safe. Everything is safe, and unnecessarily people are making hue and cry of some non-issue. Which should not be encouraged by anybody, because our government also enforces the same international standards as any other country. So I do not think India is lacking in this regard. Right. Can you highlight some eco-friendliness? Okay, I tell you, for example, many times what people misunderstand about use of plastic and plastic per se. Supposing you are throwing the plastic on the road and you say that this bag is bad. Plastic is not bad, the users are bad. Particularly in case of PET, nothing is thrown because it can be recycled. In fact, many of these leading companies are taking their PET bottles back. There is a concern that PET is a threat to environment and it cannot be recycled. आपकी क्या comments है उसके ऊपर? No, I think it's not true. In fact, PET is one of the most recycled plastic materials. In fact, globally, not only in India, all over the world, because the fact that there are multiple methods by which PET bottles can be recycled, and they are recycled into many other products. In fact, most of the people don't even realize that the pillows on which they sleep every night is actually made out of recycled PET bottles. So that fact, retrieving and handling of PET bottles, is it economically, unviable or what? It is very economically viable. In fact, there's a whole host of industry today which is working on recovering the material from the PET bottles. Right. In fact, it is an opportunity for people to set up new investment, new employment, and also create products that are used by everybody. Dr. Tambe, what difficulties do you see in the retrieving and handling of alternative of PET bottles such as glass? As I said earlier, this breaking of this glass bottle will, for a safety concern, it may injure. At the same time, these rat pickers, who pick up these bottles, and they also are at risk of getting injured themselves compared to this plastic bottle or these PET bottles. So the safety concern is more important. My next question to you would be to Professor Yadav. क्या लगता है उसका difference क्या है कि carbon footprint of a PET as compared to the alternative materials such as glass? Can you elaborate more on that? Very good question. Glass is made from silica, is one of the basic materials, and then you have soda, or soda lime gas, glass. All these are high temperature processes. And so the energy requirement of glass making is very high in comparison with these plastics, or making this PET bottle, for instance. Right. And in this case, you look at the carbon footprint, because it is totally recycled.
So I really speaking, it is closer to zero carbon footprint. If once you start that material, you come back to the same thing. So even whatever losses are there, the energy requirement, they are much less in comparison with glass make, and the availability and the cost. The cost is very cheap in comparison with glass, and you can look at the inconvenience. Earlier we used to have glass bottles for milk. No longer you see them. Right. Moving on to the last section, your closing comments on that. I believe that PET is a very sustainable material. In fact, just to elaborate what Professor Yadav just mentioned, supposing I have a 350 ml of a liquid, right. Okay, I want to pack it in a glass bottle, right. I will need 200 grams of glass. I will need 25 grams of PET. So you can see the weight difference in order to pack the same amount of liquid in a bottle. Apart from the fact that people must realize that PET is something that is fully recyclable, and therefore it doesn't leave any footprint of any kind. In fact, in principle, PET can go back into other products that we can consume. So PET is fully sustainable, it is recyclable, it conserves energy. Now imagine transporting glass bottles, because the weight of the bottles is so different. In fact, I said it's almost 10 times higher, the glass bottle of equivalent capacity. Now you need to truck them. Look at the amount of diesel that you will need in order to transport it from point A to point B, and look at the amount of carbon dioxide emission that is going to generate, the added cost of fuel. So I think if you look at the totality, in fact studies are available, data is available which show that PET is extremely efficient in terms of the carbon footprint, in terms of all sustainability parameters that we know today. Any closing comments from you, Professor Yadav? I think, PET per se is a very safe material of construction, no matter where you use it, whether it is for drinking water or in medicines or hospitals or wherever. And it can be recycled very nicely. So the concerns that were pertaining to the health, to the leaching, they are ill-founded. Yeah, they are ill-founded, and I think they should listen to science and scientists rather than somebody else who doesn't understand the science behind it. So आपका मतलब ये है कि ये जो consumption of PET है, PET packaged food और medicines हो गया, that turned out to be a myth. It's just a myth. That is a myth, and actually I think the option which they are proposing is not going to be viable in today's cost-conscious world. So are you saying that PET packaged food and medicines are safe for human health? 100%. True. Dr. Tambe, your last and closing comments. Plastic is bottles which is very safe, right? Very economical and very convenient. Right. So daily uses, it's a part of a daily use of any doctor. ये मानते हैं there are no heavy metals or cancer causing chemicals in the PET bottles. Till my now practice, last 23 years, I have not seen a single patient, and there is no definite data on that. There is no research paper on it till now in Indian studies. All right, moving on to Mr. Sanghvi, your closing comments, sir. Medicinal purpose, for packaging of medicine, safety of medicine administered in PET bottles, there are no concerns. It is absolutely okay, and there are a lot of studies to demonstrate that. Okay, thank you so much, and thank you so much, Dr. Sivaram, Professor Yadav, Dr. Tambe, and Dr. Sanghvi, and Dr. Bipin. Thank you so much for being on Zee Business. होप ये सेशन से आपको एक बहुत ही बड़ा एक आई ओपनर रहा होगा कि प्लास्टिक यूज करने से कोई भी इंपैक्ट ह्यूमन हेल्थ पे नहीं होता है. से फॉर एग्जांपल लीचिंग हो गया, हेवी मेटल्स एंड थैलेट्स, कैंसर कॉजिंग केमिकल्स, ऐसा कुछ भी नहीं इंपैक्ट होता है आपके ऊपर. बहुत बहुत धन्यवाद.